Hi everyone, welcome to my channel and I know this is such a long gap. जैसे कल हम लोगों का पिकनिक का प्लानिंग है एंड उसके लिए जस्ट हम सोच रहे हैं कि कुछ आउटफिट बनाएगा एंड जब बना ही रहे तो हम ये रिकॉर्ड भी कर लेगा एंड इन दिस वे ये मेरे लिए एक DIY वीडियो भी हो जाएगा और एक रिमेम्बरेंस भी रह जाएगा मेरा पिकनिक का। तो ये हम लोग का रेस्टोरेंट का फर्स्ट पिकनिक होगा एंड या कल के लिए जस्ट थोड़ा सा एक्साइटेड है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आई डोंट नो आज हम कंप्लीट कर पाएगा कि नहीं। फिर भी आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कंप्लीट इट विद इन दिस। कितना टाइम है मेरे पास? अभी टाइम हुआ है 3:47, मान लो 4 बज गया। उसके बाद अभी 4 घंटा। आई विल ट्राई टू कंप्लीट बिफोर 8 क्योंकि रेस्टोरेंट क्लोजिंग टाइम 9 को होता है, बट 8 तक आई विल ट्राई टू टेक माई टाइम। और एक बात है, ये वीडियो जब रिकॉर्डिंग कर रहा होगा प्लीज़ डोंट माइंड माई जला वाला हाथ, क्योंकि ये जो जला वाला हाथ है ये लास्ट ईयर का घाव है जो अभी तक सूख ही रहा है। एंड कोई बात नहीं, चलो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। So for this DIY video, I'm going to show you all how I made this ruffle wrap skirt from Urbanic. To make this skirt, we're going to need some measurements first, that is the size of your waist and the length of the skirt. After you have your measurements, go to the circle skirt calculator and put down all the details, and this website will do all the maths for you. For this project, I'm using this 2 meter of polyester fabric, but of course you may need more or less depending on your size. Now I'm just going to follow the instruction from the circle skirt calculator, but here is the modification. According to the instruction, my waist radius is 9 of 1/4. I don't know if I am pronouncing it wrong, then please do correct me in the comment section. And to this I'm going to add 7 inches extra, that is the 1/4 of my waist size. As this skirt is asymmetrical, that is it is long from the back side and it is short from the front side, so I'm just going to cut out the fabric, leaving the back side longer than the front side. Now from the leftover fabrics, I'm going to make a very long strap of fabric, which is going to be the ruffles on the skirt. So now we're going to make gathering on the strap fabric and then attach it to the edge of the skirt, and we're almost done with this project. So finally, for the final step of this project is to make the strap for the skirt, and we are done with this project.
If you like watching my DIY videos, then please give this video a like and also subscribe my channel for more future DIY videos, and also share it with your friends. फाइनली मेरा स्कर्ट भी कंप्लीट हो गया है एंड 8 बजे से पहले हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए एंड ऑल्सो अपने फ्रेंड्स जो ऐसा है कोई है हु इज़ इंटरेस्टेड इन DIY प्रोजेक्ट्स तो प्लीज़ शेयर विद देम एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओके अभी यहाँ बहुत अंधेरा हो गया एंड इट्स टाइम टू गो बैक टू माई रेस्टोरेंट एंड ओके I'll see you जस्ट पिकनिक स्पॉट पे मिलते हैं फिर। मत गिर जाओ हैं। Sometimes someone turns to be the one that gives you everything, just like you did. Took me by surprise, made me complete. You changed my life, made me believe in real love. And now my heart beats, it beats for you. Since you came into my life, I never felt like so in love and so excited, 'cause you're so right. Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine. Now I'm never leaving you, leaving your side, 'cause you're mine.